अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 9th क्लास जो बायो है उस पर होगा और ये पहला लेक्चर है 9th क्लास का, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद जो इसकी मेन डिवीज़न है वो पढ़ेंगे और उसकी ब्रांचेस जो है ये पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये लेक्चर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 9th क्लास के लिए है, लेकिन अगर आपको बेसिक बायोलॉजी पढ़नी है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। नाउ वी हैव फर्स्ट चैप्टर इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन। So first we are going to discuss what is biology. अगर हम बायोलॉजी वर्ड पर कंसंट्रेट करें तो ये दो वर्ड से बनी हुई है। नंबर वन इज बायोस which means life, and second word is logos, it means to know। बहुत ही सिंपल अगर इसकी हम मीनिंग या एक डेफिनेशन बताएं तो वो होगा कि इट्स अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट्स अ यू कैन से स्टडी ऑफ लाइफ। सो द सिंपल डेफिनेशन इज biology is study of living, or we can say it's a study of life. Now then we have a question कि what are the living organisms, what is the life। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लाइफ के लिए। Say example, if we are going to discuss life or living, now then keep in mind that all livings possess some characters, like living organisms they can respire, living organisms they can grow, living organisms you can say they can excrete। जितने भी प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ लिविंग के कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो लाजमी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई हो। जैसा कि जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो प्रोसेस होता है, हम लोकोमोशन का यूज़ करते हैं एक वर्ड, एक जो है मैकेनिज़्म, लेकिन ये प्लांट में लोकोमोशन का मैकेनिज़्म बहुत ही कम पैमाने पर होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि लोकोमोशन उनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वहाँ पर होती है और जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर लोकोमोशन होती है, लेकिन पूरे प्लांट की बॉडी में लोकोमोशन नहीं होती। सो लिविंग्स आर दोज दे possess some properties of life। say example, they can respire, they can digest, they can grow, they can reproduce, they can you can say excrete, they can locomote। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जो लोकोमोशन है ये हम कह सकते हैं ये हम लोअर एनिमल्स पर अप्लाई करते हैं, और जो है हायर एनिमल्स, हायर किस सेंस में, हायर इन सेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, लोअर इन सेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, राइट। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ living organisms। Now biology has some divisions, there are three major important division of biology.
Say example number 1 is zoology, number 2 is botany, number 3 is microbiology. फर्दर जो भी ब्रांचेस होती है बायोलॉजी की वो इन मेन ब्रांचेस में से अराइज होती है. से एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन zoology, so zoology in sense of zoo and logos, so you know zoo in sense of animals and logos means to know, so it's a study of animals. But keep in mind, it's not only study of living animals, but it's a scientific study of animals. हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं साइंसी बुनियाद पर. We differentiate on the basis of anatomical, on the basis of morphology, on the basis of taxonomy. तो ये हम जो है zoology में स्टडी करते हैं कि it's a scientific study of animals. Scientific study means study in sense of, you can say, on the basis of anatomy, on the basis of morphology, on the basis of taxonomy, on the basis of physiology, so on. तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो है, यहाँ जो भी साइंस है, साइंस के हिसाब से हम इनकी एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो ये जूलॉजी की ब्रांच में इंक्लूडेड होगा. नाउ देन वी हैव अनदर ब्रांच एंड मेन ब्रांच, वेरी सिंपल ब्रांच, बॉटनी. नाउ दिस बॉटनी इज अ scientific study of plant, scientific study of plant, scientific study in sense के what is the morphology of plant, what is the taxonomy, what is, you can say, physiology, what are the mechanisms are in plant. Say example, if this one is a plant and it's a leaf, and say example these are flowers, so how flower structure is, what is the function of leaf, what is the function of stem, how water is moving into plant, how food is distributing into plant. So this whole description is included in botany study, right? So now then we have a third very important branches, we can say division. Important division is microbiology. Microbiology is a study of unicellular living organisms. बहुत ही सिंपल, स्टडी ऑफ यूनिसेल्युलर लिविंग मीन्स स्टडी ऑफ सिंगल सेल. तो माइक्रोबायोलॉजी हमारे सेल की भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रोटोज़ा, बैक्टीरिया और वायरोलॉजी जो ब्रांच है वो भी माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूडेड होती है. तो ये हमारी थ्री जो है डिवीज़न है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस को. सो नाउ वी हैव ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी
तो 9th क्लास में जो ब्रांचेस हमारे पास इंक्लूडेड हैं, नंबर 1 ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी. नाउ मॉर्फ इन सेंस ऑफ शेप. अगर हम एनिमल्स की, प्लांट की, उनके शेप की स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल बेसिस पर हम उनकी स्टडी करेंगे, तो ये मॉर्फोलॉजी में इंक्लूडेड होगा. वेरी सिंपल, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स और प्लांट. लेकिन ये एनिमल्स के ऑर्गन्स की भी हो सकती है कि ऑर्गन्स का शेप कैसा है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर हार्ट, अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी होगी. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर लंग्स, सो इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन द मॉर्फोलॉजी. बट इन प्लांट it's also a study of, you can say, what is the morphology of leaves, stem and branches. Okay, तो ये morphology में included होगा. Now the reverse of morphology is anatomy. Anatomy इसके reverse होती है, जिसमें आप इंटरनल स्टडी करते हैं. इट्स द इंटरनल स्टडी ऑफ एनिमल्स और प्लांट. इट्स अ इंटरनल स्टडी. फॉर एग्जांपल वी हैव 4 चैम्बर ऑफ हार्ट. हमें कैसे पता चला? फ्रॉम एनाटॉमी. आवर किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कैसे पता चला? थ्रू दी एनाटॉमी. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ xylem, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ phloem, व्हाट इज द एनाटॉमिकल सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स. तो ये भी हमें एनाटॉमी के थ्रू मालूम होगा. नाउ देन वी हैव सेल बायोलॉजी, और द सेकेंड नेम इज साइटोलॉजी. Now cytology is study of cell. You discuss the structure of cell. You discuss the composition of cell. And you discuss the functions of cell. आप सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, उसका फंक्शन डिस्कस करते हैं, उनकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं. तो ये आपके सेल बायोलॉजी में आ जाएगा, साइटोलॉजी में आ जाएगा. मीन्स इट्स अ स्टडी ऑफ सेल. नाउ देन अनदर ब्रांच इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन. हम क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पर करते हैं, सिमिलरिटीज़ बेसिस और डिसिमिलरिटीज़ पर. देन वी गिव द, और यू कैन से वी आइडेंटिफाई लिविंग, एंड एट द एंड वी गिव साइंटिफिक नेम. आप टैक्सोनॉमी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उनके सिमिलरिटीज़ बेसिस पर और डिसिमिलरिटीज़ बेसिस पर, एंड देन यू आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एट द एंड you give the scientific name. It may be the scientific name of the botanical name or maybe it's a zoological name, और आप कह सकते हैं ये scientific name भी कह सकते हैं आप. So like our scientific name is Homo sapien. तो ये important branches थी. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और फर्दर जो ब्रांचेस होंगी उनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.